Hey, so let's look at Nifty 50 1 hour. In my last post market video, I had mentioned that I'm looking for 17600 levels, but I will not go short here. I'll probably decide what happens if it comes here. If I'm going to go short or if I'm going to do a scalp buy kind of a thing on intraday. But yeah, looking at as I probably if you're looking at my post market videos from last 3-4 days, I had mentioned that mostly this will be the case. A couple of candles will make or bring in the move, and then mostly it will be sideways. That has been the case. Why? Because it has been inside. Still, it is still in that range of that budget day high and low. So let's see what happens when. So my expectation from here is to for it to go around 17600 levels, and then I'll decide what to do. Till then, I'm not doing anything. What I did today was in the morning that I only took one. I only did one trade. So basically, if in the morning, if you see there was an down move volume in Banknifty, which what I did here was when there was a consolidation around 11 o'clock, my stop loss was this high, which is I think kind of in 1:1, and my target was this low break. So did some scalping here. The trade I gave in the morning on the afternoon around 1:30, I think, on TradingView and on my YouTube channel, was basically if till 2:30, if 860 levels are, if this is retested, then I look for scalp sell VWAP break. But that did not happen, and it was basically kind of a sideways move after say 2 o'clock. So did not trade this, did not take the buy trade. Yeah, so nothing much to say. Positional did this some small scalping, and positionally I'm not interested till these levels come, and then I'll decide what to do. निफ्टी 1 आवर देखते हैं. निफ्टी 1 आवर में अगर आप देख लास्ट मेरे पोस्ट मार्केट वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो दो चीज़ है. एक कि मैंने बोला था कि ये 17600 लेवल्स का मैं वेट करूँगा स्पॉट में, उसके बाद डिसाइड करूँगा क्या करना है. अगर ये ऊपर जाता तो भी मैं बाय नहीं करूँगा. तो वो वही हुआ, मतलब वो हुआ तो नहीं, पर देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट 2-3 दिन में. और मैंने एक और चीज़ बोली थी, अगर आप मेरे पोस्ट मार्केट वीडियोस देख रहे हैं, कि मोस्टली ये ऐसे ही चलेगा. एक दो कैंडल मूव बनाएंगे और फिर साइडवेज रहेगा, क्योंकि अभी भी ये बजट डे के हाई और लो के बीच के रेंज में जा रहा है. ये है, इसने अभी भी कुछ वो नहीं किया है, क्योंकि रेंज बहुत बड़ा है. तो 100 पॉइंट फॉल भी आता है तो लोग बोलते हैं 16,000 आने वाला है. तो देखते हैं. बैंक निफ्टी में मैंने आज ये वाला ट्रेड लिया क्योंकि एक डाउन वॉल्यूम आया था सुबह और यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था. तो मेरा स्टॉप लॉस, ये मतलब सेंस ऐसे बनता नहीं कि हमेशा डाउन वॉल्यूम आया और कंसोलिडेशन हो तो सेल है, पर मैंने एक रिस्क लिया था यहाँ पर. मेरा स्टॉप लॉस था ये डाउन वॉल्यूम का हाई, और मेरे पास कोई और पैटर्न था नहीं इसमें. तो मेरे टारगेट था ये लो का ब्रेक, जो कि हुआ और मैं निकल गया. अगर आप देखें तो मैंने एक ट्रेड दिया था 130 के आसपास ट्रेडिंग व्यू में, और मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बोला था कि अगर 230 तक 17860 आता है तो मैं स्कैल्प सेल देखूँगा VWAP ब्रेक के लिए. पर वो हुआ नहीं, तो मैंने ट्रेड नहीं किया, ना मैंने ये मूव पकड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि ऊपर जाएगा, लेकिन मैं बुलिश नहीं हूँ इस मार्केट में, तो मैंने ये मूव नहीं पकड़ा. और बस मैंने ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं, सिर्फ एक ट्रेड किया है, और मैं वेट कर रहा हूँ क्या करना है करके. थैंक यू.